the circumstances that people today are living in 2023 is that everybody is scared, especially economically and psychologically and socially. It means crisis. Everywhere is crisis. Doesn't matter you're in Europe, the first world, the West, or you are in the South and the Asian and African continent, which never had good days, are having worse days ahead of them. Globally thinking, everybody is suffering, and we are pointing at that where everybody is thinking about, to put our heads together in understanding. What is it that is affecting everybody? It is amniyati iqtisadi. We are unsure and uninsured of the economic security. The haves and the have-nots both are insecure economically because of, talking about inflation or the cost of living rising, or mental health going out through the roof, and crime increasing, and things deteriorating, social. So economy is part of, or probably an entirely different operating system that is running society, affecting everybody. Everybody is running after a loaf of bread, and he has left every imagination of life that could be, the positive and the bright and the hopeful. That condition is affecting everybody. So what should we do? This frame is the solution for from the and for the Muslim civilization, whether living in the West or living in the East. Doesn't matter, East and West, both the people are suffering. Cost of living rising, wars are escalating, conflicts are increasing, stability is not in view. So because it is in Persian, so we're very happy to have Mr. John to explain. آقای منصور جان که برای ما توضیح بدهد, explain to us and add his contribution, and then Mr. Khan is also there, who is going to put his contribution in understanding both the Persian side and the Pakistani side and the subcontinent overall in Central Asia. These three directions. Persian speaking, whether they could be globally anywhere, but geographically we're talking about subcontinent and Persia. Today's Iran and Pakistan and Hindustan and Afghanistan and Tajikistan, and the heart of Asia is speaking Farsi and Urdu, and they are both related. तो अंग्रेज़ी क्योंकि माशरत social media में it's becoming a necessity, so we are going to use three languages by focusing this decoding how to do an economic martial art. Me personally, how do I defend myself in this onslaught of hunger and worry and anxiety and sickness and disease and destruction, negative falling down of everything, of morals and democracy and systems that upon which wars were fought and worlds were built is crumbling. So in that condition, my contribution is that iqtisadi khawas is the elite in economy. So macroeconomy, companies, corporations, running the world, running the governments, installing, deinstalling. That is opposite to iqtisadi khususi. Sorry, iqtisadi khawas is opposite of iqtisadi awam, and iqtisadi umumi is opposite of the iqtisadi khususi. In umumi, awam and khawas, the elite
and the public both interact. This is level 2, and in here the level is called iqtisadi amaliyati in Farsi, operational level. The level, we are talking about scales. So from personal, group, nations, and then global. So globally, the elite is running the world. Silently, not speaking, nobody's talking about, and they are not talking about anything. Just getting on with their imperial ambitions. That level, this column is the levels. These are the names of economies. These are the levels of economies. Strategic economy, Hawas. Amaliyati economy, iqtisadi amaliyati, umumi, marketplace. इक़्तिसादी ताक्तिकी आवाम, इक़्तिसादी तकनीकी खुसूसी मानो तू, मेरी अपनी इकोनॉमिक शराइत कंडीशंस. Okay, so personal levels, group levels, national levels, and global level. So two, clear? So 1, 2, 3, name. Khawas, umumi, awam, khususi. Levels, strategic, operational, tactical, technical. Number 4, khususi is just like Private. Okay, private. Personal level. Person. बिल्कुल ज़मीन के ऊपर. Every person is in this level. Yeah. This and the level name is khususi, the economy, but its level is technical level. यानी technique is personal, one-to-one. Okay, now we are going to this column where every level of conflict, munazi'at, sutuhe munazi'ah. Now they are all in conflict. Paham munazi'ah naza daran. वो उसके साथ competition, वो उसके साथ शिकायत, वो उसके पीछे लगा हुआ है. برای level strategic in جنگ اقتصادی است. برای level اقتصاد عملیاتی این نبرد اقتصادی می شود. Battle, that is war. Strategic global level पे اقتصادی war जारी है माशी. और उमूमी जो है वहाँ पर battles जारी हैं. वो उस कंपनी के बीच में, उस गवर्नमेंट और फलाने के बीच में, उस फॉरेन और उस everywhere is conflicts going on. Nabard, battle. Then in the tactical we come to razm iqtisadi ke combat has. Groups and gang wars. Exactly, combats are going on. Battle can begin, after a while stop, and then sometimes it is quiet. But nabard is going on all the time. Conflicts are even underground going on. In the level of awam, combats are going on. Hama baham munazi'ah daran dar razman. Economic khususi जो है, जो technical level है, वो उसको कहते हैं पैकार इक्तिसादी, यानी everybody is doing fight. For their own survival. Ay shabash, with every other person. به عبارت دیگه دوتای اول اگه اقتصاد مکرو باشه، دوتای دوم اقتصاد ماکرو. درست. اولی اقتصاد جنگ، قدرت ها، امپریالیسم، تمدن بزرگ حاضر نیست تمدن های کوچکتر رو آزادی بده، زیر سلطه داره. و اقتصاد عمومی مکرو اکونومی، خب نظریه های اقتصادی از مارکس و لیبرالیسم و اقتصادهای سوشالیسم به هر حال از نظر تئوری، و اقتصاد تاکتیکی و اقتصاد تکنیکی، هر دو اقتصاد ماکرو، اقتصاد عوام، بازار و اقتصاد خصوصی در روابط خصوصی و فردی. بله. इन हर लेवल पे मुकाबला चल रहा है. जारी है मैदान जंग. मतलब मुल्कों के साथ लगे हुए हैं, गैंग्स के साथ लगे हुए हैं, और इंडिविजुअल्स घर के साथ लगा हुआ है, और फर्द के साथ लगा हुआ है, और फिर फर्द के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जारी है. और ऊपर
ऊपर से ग्लोबल वाले आपस में भी लगे हुए हैं और नीचे भी देख रहे हैं यार इन दो कंट्रीज को लड़वा दें तो हमारा ये आफरीन। ये अब कॉन्फ्लिक्ट्स के लेवल समझ में आ गए, खुद इकोनॉमी के लेवल्स 4 लेवल समझ में आ गए। नाउ दिस इज क्लियर, the 4 levels of economy and then the 4 levels of the conflict. Level of conflict: war, battle, combat, fight. و همه هم مبتنی بر سود و زیان. Okay, we will come to that. سود و زیان. Affarin. In this column is called आसिफ शनासी इक्तिसादी. अभी हम लेवल की बात नहीं करेंगे, लेवल हमारे समझ में आ गया, नाम भी समझ में आ गए चारों, ठीक है, वॉर से लेकर फाइट तक समझ में आ गया। अब आसिफ शनासी करेंगे हम। आसिफ शनासी यानी ची, हाउ डू यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आसिफ शनासी? آسیب شناسی مثل روانی، شناخت psychological disorder. So آسیب شناسی, what is wrong with this اقتصاد استراتژیک. Okay, آفرین آفرین मंसूर जान अजीज़ के खोल दिए हमारे लिए, explained. Now I will further open it. This is for ourselves. We are talking to ourselves. And this is a great moment for which we have been waiting to speak. Just like that Fakir. 363 days we have waited. He is our Mullah Nasruddin waiting for One day is today and tomorrow is the last day. Then we will not be able to speak. Oh my goodness, come on guys. So, Asif Shanasi, yani what is the vulnerability of this? ज़ाफ़ इन चीज़ कहाँ से ये इसमें फॉल्ट लाइन किधर है इसका? स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो इकोनॉमी है ना, एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी या कमज़ोरी है उसको कहते हैं मईशत मंदी, नियाज़ बक़वाइद बराए अमरार माश। यानी आपने माश को, एक मईशत को एक सिस्टम बनाया है। You have turned this huge economic machinery that in order for me to earn my living, I need to go through a systematic approach, then I can earn my living. I have to spend my best years of my life, instead of playing in the fields green like this near the rivers and becoming naturally living under the sun and building in me a human being that is naturally built. Instead, I am in boxes in big cities, and I'm traveling in boxes. Then I'm going into boxes, which then I'm put into a chair, in a table, in a box, and says box thinking. And look here in this box, and this box, tick this box, and do that in this box, and then color this box, and then it becomes a box when he comes out. He's just walking like this. What is the value of currency? Dollar, Okay. pound, and the follow. This is going up. The value of dollar, all other Should dominate the rest of currencies of the rest of the world. That's Okay. the thing. On yani maishat khud, the economy itself has become the center of the world, and for economic gain you could do anything. That is the war. भाई मुझे ये मुल्क चाहिए. I will take that oil. I want that river. I will take the minerals. Who? The giant corporations who are running the countries and running the politics of the world today. In the umumi marketplace, in the common market, every group of the people, every society like to have malikiyat mandi. एक कमजोरी है कि मैं ना मालिक बन जाऊं. इसमें कैपिटलिज्म को फेवर किया जा रहा है. Yes, private property ownership. Yes. कितनी गाड़ियां, कितने एकड़, कितना अकाउंट, कि उस पर मेरा नाम लगा हो और मैं बोलूं मेरे हैं. They are mine. कॉपीराइट्स पर सारा है. Oh, patented in my name. It's a very interesting question to ask, that who patented
whose name it is patented, the coronavirus? That's an interesting question to follow. If that was a public domain thing, and it means there is nobody interested in making money about it, but it is private, because once patent is in your name, it is yours. That is malikiyat mandi, ownership. Principle of ownership is running the whole common economy of the world. Everybody. Doesn't matter which boundary, which border, which color, which creed, which language. No. Malikiyat mandi, like an instinctual curiosity. And that's the basis of wealth. Who Yeah. owns How much? how much? And those who own, like You know he is a billionaire. You know he is the owner of that thing. more powerful. You know Elon Musk is sitting with that president, and the president looked small in front of him. Or this is the battle, because I want to own more, then I have to be in battle with you. Because you want to own more, you need to be in battle with him. And awam, common people, वो जो vulnerability और कमज़ोरी है, systematic error है उसके अंदर, उसका नाम है मनफ़ाअतमंदी, profit seeking. वो तो सब में है ना, हाँ, awam. अवाम में भी है और ऊपर भी है, सब प्रॉफिट कंट्रोल लेना चाहते हैं। ये तो इकोनॉमी ही को सेंटर बना के चल रहे हैं ना, इसीलिए तो इकोनॉमिक सेंटर जब हो जाता है, जब कंट्रोल उनके पास है। हाँ मतलब काम ही सब कुछ है इकोनॉमिक बेस्ड, बाकी बातों छोड़ो, ये मसला इकोनॉमिक है। मनफातमंदी यानी बर्ताफ्तान सूद व नफ़े ज़रर, एवरीबॉडी, मगर नुकसान से बचने की कोशिश करो और फ़ायदा बढ़ाने की कोशिश करो। अब सबको फ़ायदे हो रहे हैं, ये नुकसान कौन बर्दाश्त कर रहा है भाई? बेशक वो जंगें हो रही हैं या कुछ हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, लेकिन सबकी तमन्ना है ना, वो तो जिसका नुकसान हो गया, वो तो रूल यही है कि किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान है। लेकिन यहाँ पर इंस्टिंक्ट सबकी यही है कि मुझे बस फ़ायदा ही होना चाहिए ना। बहुत कम ऐसे होंगे, वेरी फ्यू पीपल वुड से वेल इट्स एन एडवेंचर, इट्स अ वेंचर, I might lose, I might win, but I'm going to do it anyway. But आवाम का ये कि नुकसान हो जाए, सब कहते हैं रद्द करो भाई। व खुसूसी प्राइवेट लेवल पे, फर्दी लेवल पे, इंडिविजुअली उनकी कमज़ोरी है रिफाहमंदी। बड़ी अच्छी सेट लाइफ चाहिए यार, ये तमन्ना हर किसी की प्राइवेट ड्रीम है। Dream, yes. सआदत मादी, नो ये होना चाहिए, वो होना। Which one person गैर दरविश, who do you think is not vulnerable to रिफाहमंदी, कि मुझे वो मिलना चाहिए? You can pass on the camera to Mansoor Khan now. 1, 2, 3, 4, 5 column आपने सुन लिया. You've heard, we talked about the 5th column is the vulnerability, कमज़ोरी. तहदीद शनासी इक़्तिसादी is the 6th one. Now इसको एक थ्रेट भी है। इसका मतलब एक तो एक कमज़ोरी सिस्टम के अंदर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ग्लोबल हो या पर्सनल, ठीक है ना, उन सब में कमज़ोरियां हैं। और अगर उन कमज़ोरियों पर हमला भी हो तो वो कौन है? ये कॉलम नंबर 6। बिकॉज खवास जो है वो दे प्ले लिबरल इकोनॉमी। که حالا شده نیولیبرالیسم. Neoliberalism kehega, that is even not liberalism. Not everybody is liberated to do, only few people are liberal to do. Liberal economy, liberalism in economy, that whoever can and
will do, let him do. Then there is black market economy, then there is offshore companies, and there are so much going on in liberal economy, because how much corruption can you do in the economy in terms of black money, in terms of avoiding taxes in tax havens all across the world. And by the way, we are sitting right in the middle of it. و توجیهش هم اقتصاد نیولیبرالیسم تکیهش بر منافع امروز و اینجا هست، معادی در اون وجود نداره. ابھی कहते हैं एक माश, one is माश, ये जो जिंदगी को चलाना है, एक है माद. अब ये कॉन्सेप्ट इसीलिए कहा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन के लिए ये नक्शा कि हम तैयार कैसे हो जाएं इस वॉर में, अपना फाइट कैसे करें. For that reason, in order to be able to find our fight on the personal level, we are now on the sixth column, which is the threat aspect. To analyze the threat, what is the threat on it, which is from outside. Because Hawas, اینا باور ندارن که معادی هست و یه برگشت هست و یه حساب و کتابی هست. اینا باور نیست، چیزی نیست، برگشت نیست، جبران کاری نیست. عمومی جو the threat to the common market is مالکیت درجه یک, private ownership, personal ownership. عمومی متأثر از اومانیزم. ایدئولوژی اومانیزم میگوید که هیومن مرکز. Humanism means human is the center and everything else moves around it. That philosophy or ideology of humanism inspires that because you're human and this you worked for and this is for you and it is yours, so it is now yours. You are the private owner, primary owner. That is the threat. For awam, mercantilism yani saudagari wa sudengari. Awam, everyone is a tajir. कि मैं किसके ऊपर क्या बेच के ना कितना मैं के फ़ायदा कमाऊँ, सब इसी मोड में जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे ऐसे हो रहे हैं. और लेवल इक़्तिसाद खुसूसी, फोर्थ लेवल पे लिबरल वेलफेयर यानी रिफाह इबाही. इबाही यानी मेरी मर्ज़ी. یعنی یک انصافی هم درش هست اقتصاد خصوصی. نه این threat, this is a threat. Every person is under the threat कि वो because एक कमज़ोरी उसके अंदर है कि वो अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, रिफाहमंदी, फलाह पाया भाई, मैं मुझे मिल गया, सब में कामयाब हो गया ना. इसकी वजह से उसको थ्रेट हो जाते हैं लिबरल वेलफेयर का, जिसका मतलब है कि किस हद तक जाओ, तेरी मर्जी. इस अच्छी लाइफ का क्या डेफिनेशन है, तेरी मर्जी. मतलब आपको एक घर भी चाहिए और आजकल एक बंदा ऐसा घर बना रहा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. ओए होए होए होए. तो वो फिर मर्जी के चक्कर में वो लगा हुआ है. वो है थ्रेट लिबरल वेलफेयर का, यानी तुम्हारी मर्जी पर कि तुम कब कहोगे कि हाँ अभी ठीक हो गया जी. तो ये तो पेट भरना ही नहीं है. नहीं भरना है. ये हो गया नंबर 6 कॉलम. एंड देन नंबर 7वां कॉलम, और उसके बाद ये 8वां कॉलम जो है ये सोल्यूशन है मुसलमानों को, जो मानते हैं उन्हें के तस्लीम हकीकतन दर शरीयत मोहम्मदन برای اوشان یک راه حل هست در این جدال where there is fight in this war. So finally we are reaching to the بحران اقتصادی. अब हर level, every level's crisis is being described. Every level's crisis. In the strategic economy,
बहरान यानी इसको जब क्राइसिस हो जाता है इसकी माहियत माश در خطر میفتد مثل حالا माहियत माश खलत हलाल व हराम legal illegal you don't care. you don't care, you don't care. Oh, it is human rights against human rights, it is colonization, it is imperialism, it is oppression, it is what is it, you don't care. ना जायज नाजायज जो भी Jaiz na jaiz, that is Bahran. What do you think we are in that Bahran globally in the war? हर कोई बस प्रॉफिट चाहता है, उसको ये नहीं है कि How? लीगल है या नहीं है. Yes, especially the bigger ones who are avoiding taxes and not paying in the public sector. तो अमूमी कॉमन मार्केट में माल मंदी, materialism, how much material you have, how many things you own. In तीसरे level, the third level, अफजाइश शिकाफ फ़क्र व ग़िना दर असर तकासुर सिरवत, क्योंकि everybody was under the threat of becoming only profit oriented, then some people became the winners and a lot of people became the losers. and division of class division. Don't you think we have that? فقر و غنی. फ़कीर व गनी कब से नहीं है? ये इसका शिगाफ बढ़ता जा रहा है, गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर. और फोर्थ लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो टेक्निकल इकोनॉमी है, उसमें जो फाइट हर कोई फाइट कर रहा है, उसके अंदर जो कमज़ोरी है वो रिफाहमंदी है कि वो कहता है कि यार मुझे ज़्यादा दौलत मिले तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, मैं एंजॉय करूं. वो उसको एक थ्रेट है कि वो लिबरल वेलफेयर में तो नहीं गया, मतलब वेलफेयर कहाँ तक, कितना मज़े में रहना है. और उसका जो बहरान है वो है मसरफ गिराई बा इसराफ व तब्ज़ीर, कंज्यूमरिस्ट. یه بخش शॉपिंग करनी है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या चीज़ खरीदनी है, हाउ मच इज इट कॉस्टिंग. मसरफ गिराई, कंज्यूमरिस्ट. नाउ एवरी वन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर, work to consume, and that is how the economic securities problems have been highlighted for you. Hopefully it has helped in understanding. There is a lot to speak, but we will come to the दुख्तुरुनी मुकाबला. Now इसके साथ मुकाबला कैसे करें, वो उनके लिए है जो आमादा हो जाएं और कहें जी मैं इस अप्रोच को एज अ स्ट्रेटेजिक लेवल से लेकर पर्सनल लेवल तक आई विल अप्लाई दैट इन द नेक्स्ट सेशन. This is very important actually. अभी वो हम आपकी कहानी बैठ के सुनेंगे. مرحبا. थैंक यू वेरी मच.